ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने संसद के मंगलवार से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक संसद भवन परिसर में 12 बजे होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान सरकार सत्र के दौरान संसद का कामकाज सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग चाहेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से आरंभ होगा। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को केंद्रीय कक्ष में सुबह 11 बजे संबोधित करेंगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिनों के दौरान 27 बैठकें होंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक होगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा और इस दौरान विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अनुदान मांगों की जांच करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। भारत की अध्यक्षता में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आज से चंडीगढ़ में होगी। आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक सलाहकार अनुपी मथाई ने चंडीगढ़ में संवाददाताओं को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप G20 फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शाखा है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कमजोर देशों की चुनौतियों का समाधान तलाशना है। उन्होंने कहा कि G20 सदस्य देशों, आमंत्रित सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 100 प्रतिनिधि 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ आएंगे। बैठक का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई कचरे के उचित तरीके से निपटान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आज हम जिन उपकरणों को नवीनतम मान रहे हैं, कल वही ई अपशिष्ट बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, कला और शिल्प का प्रदर्शन करने वाले वितस्ता कार्यक्रम के लिए संस्कृति मंत्रालय की सराहना की है। अमृत महोत्सव के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम कश्मीर की ऐतिहासिक पहचान को अन्य राज्यों में ले जाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक बस दुर्घटना में 41 लोगों की मौत हो गई। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से कराची जा रही बस के खाई में गिरने के बाद आग लग जाने से ये दुर्घटना हुई। अधिकारियों ने बताया कि मलबे से 41 शव बरामद किए गए हैं। भारत ने लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। न्यूजीलैंड के 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने एक गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 101 रन बना लिए। सूर्य कुमार यादव सर्वाधिक 26 रन बनाकर नाबाद रहे। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 99 रन बनाए। पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने रांची में भारत को 21 रन से हराया था। तीसरा और आखिरी T20 मैच बुधवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। टेनिस में नोवाक जोकोविच ने आज ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल फाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास को 6-3, 7-6, 7-6 से हराकर मेलबर्न पार्क में रिकॉर्ड 10वां खिताब जीता। सर्बियाई खिलाड़ी का ये 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
This is All India Radio. The news read by Renu Kataria. The government has convened an all-party meeting today ahead of the budget session of Parliament beginning tomorrow. The meeting will be held at 12 noon at Parliament House Complex. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi, union ministers and floor leaders of political parties representing both the House of Parliament will attend it. The budget session of Parliament will commence from tomorrow. The budget session will continue till 6th of April this year and have 27 sittings spread over 66 days. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the people in his monthly Mann Ki Baat program on All India Radio. He stressed on the need to dispose of e-waste properly as it can harm the environment. He observed that today's latest devices are the future's e-waste. The Prime Minister pointed out that e-waste can become a great force in the circular economy of recycling and reusing. The Prime Minister expressed happiness that people are adopting millets on a large scale and are making them part of their diet. He said this has a huge and visible impact on small farmers cultivating millets. The Prime Minister signed off by asking people to strengthen the Indian Republic through public participation. The nation is paying homage to Father of the Nation, Mahatma Gandhi, on his 75th death anniversary today. 30th January is also observed as Martyrs' Day. Mahatma Gandhi was assassinated on this day in 1948. An inter-religious prayer meeting will be organized at Gandhi Samadhi at Rajghat in New Delhi. The first G20 International Financial Architecture Working Group meeting under the G20 Indian Presidency will be held today and tomorrow in Chandigarh. Briefing the media persons at Chandigarh, Anu P. Mathai, Economic Advisor, Department of Economic Affairs, said that International Financial Architecture Working Group is one of the important work streams under the G20 finance track with a focus on strengthening the international financial architecture. It also aims to address multiple challenges faced by vulnerable countries. President of the 77th session of the United Nations General Assembly, Kasaba Kurosi, arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. This is his first bilateral visit to any country since he assumed UNGA presidency in September last year. The External Affairs Ministry spokesperson Arindam Bagchi said in a tweet that this is an opportunity to exchange views on global challenges that the United Nations is currently seized with. During the visit, Mr. Kurosi will hold talks with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on key multilateral and regional issues of mutual interest. More than 40 people were killed after a bus fell into a ravine and caught fire in Balochistan yesterday. Officials said 41 bodies have been recovered from the wreckage. The next Khelo India Youth Games will kickstart from today in Madhya Pradesh, in which multiple target Olympic podium scheme tops development athletes will participate. This elevates the magnitude of the games as the tops athletes who are international achievers already will inspire the grassroots level athletes to up the ante and provide a tough contest. A total of 6,000 athletes are set for competition that will take place in 8 cities of Madhya Pradesh: Bhopal, Indore, Ujjain, Gwalior, Jabalpur, Mandla, Khargone, Balaghat and in New Delhi. The Khelo India Youth Games will feature a total of 27 disciplines, water sports being included for the first time in the history of games. In cricket, India defeated New Zealand by 6 wickets in the second T20 encounter of the 3-match series in Lucknow, chasing the target of 100 runs set by New Zealand. India scored 101 runs for 4 wickets in 19.5 overs. For the hosts, Suryakumar Yadav was the highest scorer, who remained not out at 26. Batting first, the visitor had scored 99 for 8 wickets in stipulated 20 overs. The third and final T20 match will be played in Ahmedabad on Wednesday. In tennis, Novak Djokovic defeated Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6-4, 7-6-5 in the Australian Open men's singles final yesterday to claim a record-extending 10th title at Melbourne Park. It was the Serbian's 22nd Grand Slam crown, which took him level with Rafael Nadal at the top of the list of men's major champions. Talking to reporters, the 35-year-old player said he's motivated to win as many slams as possible. In the FIH Hockey World Cup, Germany have lifted the World Cup after 17 years, beating Belgium 5-4 in a penalty shootout after the game ended 3-3 in the final at the Culling Stadium in Bhubaneswar. Germany have now won the World Cup 3 times, first in 2002 and second in 2006. And that is the end of this news bulletin.